अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक मरतबा फिर आप सबको खुशामदीद। क्रिकेट क्लिनिक के साथ साइम, मुदस्सिर और आसिफ हाजिर हैं। सबसे पहले आप लोगों के को एक रिक्वेस्ट के यू नो काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल and hit the bell icon and the like button. So this helps us, putting more content for you and getting it to you. अच्छा जी, तो ये एपिसोड बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं, एज वी आर रिकॉर्डिंग दिस एपिसोड, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट एनी डे फ्रॉम नाउ the Pakistan World Cup squad is going to be announced. Most teams actually have already announced their squad. Pakistan was waiting for the Asia Cup to end. और अब अगेन एक दो इंजरीज हो गई हैं, कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस ठीक नहीं हुई हैं, सो आई थिंक दैट्स आल्सो गोना बी टेकन इनटू अकाउंट. बट we do believe that in the next week, sometimes in the next week, we are expecting कि हमारा World Cup squad आ जाएगा. Although the deadline I think is the 28th of September, but probably उससे पहले ही decide हो जाएगा. So the purpose of this episode essentially is कि हम आपको आपके साथ अपनी राय देंगे, and all three of us may not agree. We might have different opinions, but हम तीनों की राय के अंदर क्या चेंजेस होनी चाहिए इन आवर वर्ल्ड कप स्क्वाड. कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं हु वी वुड रिकमेंड टेकिंग आउट, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो हम अंदर देखना चाहेंगे, द स्क्वाड ऑफ 15, टीम बैलेंस कैसा होना चाहिए. तो इन सब पे बात करेंगे. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं. एक्चुअली सबसे पहले हम आपको अपना एशिया कप स्क्वाड एक दफ़ा दोबारा दिखा देते हैं. So this was our Asia Cup squad. So obviously we had Fakhar Zaman and Imam opening, Babar Azam coming one down, Rizwan to follow. उसके बाद फिर हमारे शुरू के गेम्स के अंदर सलमान अली आगा वाज देयर, इफ्तिखार, और इफ्तिखार के बाद फिर हमने आधे मैचेस के अंदर फ़हीम अशरफ को खिलाया. फ़हीम अशरफ जब नहीं थे तो हमने नवाज को खिलाया. एंड देन वी हैड our पेसर्स, जो नसीम, हारिस रऊफ और शाहीन थे. अनफॉर्चुनेटली जैसा कि आपने सुना होगा, नसीम की पार्टिसिपेशन इज वेरी डाउटफुल. वी आर स्टिल होपिंग that he makes a miraculous recovery, but the news coming out is not very good. And in all likelihood, it seems that unfortunately he's not going to be available for the World Cup. So उसके बारे में भी बात करेंगे कि अगर नसीम नहीं होते तो उनकी रिप्लेसमेंट क्या होगी. तो सबसे पहले हम ओपनिंग से स्टार्ट कर लेते हैं, बिकॉज ओपनिंग के अंदर फॉर अ लॉन्ग टाइम वी सीम टू हैव अ सेटल्ड ओपनिंग पेयर. वी हैड फखर जमान एंड इमामुल हक. काफी अरसे से ये दोनों ओपन कर रहे थे पाकिस्तान के लिए, एंड दे वर डूइंग प्रीटी वेल इन टर्म्स ऑफ, बहुत सारी इनकी 100 रन पार्टनरशिप्स भी रह चुकी हैं इन द पास्ट. बट रिसेंटली, as I'm sure all of you are familiar, Fakhar Zaman की जो परफॉर्मेंस है is very very concerning. um, उससे पहले जो अफगानिस्तान सीरीज थी, he didn't perform. अफगानिस्तान सीरीज से पहले जो LPL हुआ था, श्रीलंका प्रीमियर लीग, उसके अंदर भी उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी. और अब जो सारे मैचेस हुए हैं एशिया कप के, उसके अंदर भी he clearly seemed to be out of sync, out of touch. So no real performance of late. So काफी क्वेश्चन मार्क्स हो गए हैं. एंड स्पेशली जब लास्ट गेम के अंदर इमाम had to sit out, तो फखर जमान and Abdullah Shafiq opened. Abdullah Shafiq played, a brilliant knock of 50. He seemed very calm, very composed. So there is a school of thought, which I personally would agree to, is that if somebody is not performing, why keep on trying again and again and again? Just hoping कि यार एक ना एक दिन वो चल जाएगा. I'm not saying that Fakhar Zaman is a bad player. Obviously, he's had a score of 210 in the past. He's remarkable when he gets going. But uski recent performance, in my view, is a big question mark. And I would rather, at least for the start, the first 2 or 3 innings, start with Imam and Abdullah Shafiq. इसके बारे में अपने दो पैनलिस्ट से मैं अपनी राय पूछूंगा. कौन आप दोनों में से जाना चाहेगा जी पहले? Mudassir can go first. यार मैंने स्टैट शेयर किए थे एक दफा. तो फखर के अगर तुम ओवरऑल रिकॉर्ड निकालो ना, तो उसमें यूएई और एशिया में उसकी, यूएई और श्रीलंका में उसका एवरेज, ही एवरेजेस 20. हिस्टोरिकली इट्स नथिंग न्यू.
अगर आप उसके देखो न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, उसके सारे 100 बाहर है। उसके तो एशिया में तो 100 भी नहीं करता वो, तो सारे तो वो बाहर करता है वो। तो हम्म। और दूसरे अगर आप मुझे, तो वर्ल्ड कप भी तो एशिया कप में है ना, एशिया में ही है। हाँ मगर India's in Asia. Mirza, you're या not helping मगर us. मगर पिचेस या इंडिया में वो पहले खेला नहीं है कभी। इंडियन पिचेस आर नॉट सेम। इंडियन पाकिस्तानी पिचेस जो है थोड़ी फ्लैट है। अब जैसे खास तौर पे जो बांग्लादेशी पिचेस है, बांग्लादेश श्रीलंका की तो बहुत ही टफ है क्योंकि अनइवन बाउंस है। यूएई में शारजा की काफी लो स्कोरिंग है, दुबई की थोड़ी बैटिंग हो जाती है। तो फखर का रैकेट एशिया से बाहर तो बहुत ही अच्छा है, मगर इंडियन क्योंकि फ्लैट होगी ना, तो उसके जैसे पीएसएल में ही स्कोर्स। यार, लाहौर की जो था मैच अगेंस्ट नेपाल, यू कांट आस्क फॉर अ फ्लैटर विकेट। ही नेपाल के अगेंस्ट वो बंदा नहीं चला। ठीक है, तो अब बाबर आजम के जो स्कोर है ना, अगर आप हटा दो नेपाल वाले मैच के, ही स्कोर्ड 17, 29 और 10 अगेंस्ट इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका। फखर स्कोर 24 and 27, so he scored actually 27 when I think he was a top scorer in that game. तो why फखर? फिर तो आधी टीम बाहर निकाल दो। नहीं, बाकी टीम ने कुछ एटलीस्ट कुछ मैचेस में तो परफॉर्म किया। कौन से रिजवान एक मैचेस मैच में देखे? चल गया। अगर आप रिजवान आखिरी मैच में चला है आपका। इफ्तिखार ने आपकी 100 किया है। नहीं, मैं बाबर बात ने 100 किया। बाबर ने नेपाल वाले में किए ना। हाँ, बट आई मीन चलें, एक तो आपका हो गया ना, स्कोर की बात करें। एक दूसरा, हिज डोंट यू फील कि उसका द वे ही इज गेटिंग आउट, उसका एक मेंटल ब्लॉक लग रहा है, लाइक द लास्ट गेम गेटिंग आउट ऑन अ फुल टॉस, यू नो, इट यार सीम्स अ बिट आउट ऑफ सॉर्ट्स। सही है, आई एग्री। वर्ल्ड कप के 9 गेम्स हैं, ठीक है, 9 गेम्स हैं, 4 वार्म अप्स हैं। वो इतना सीनियर प्लेयर है, एक बंदे की ही वाज एवरेजिंग 50। ही इज द हाईएस्ट सेंचुरी मेकर विद इन लास्ट 4 years आफ्टर बाबर, 600 एंड बाबर है 7। जो रूट की अब तुम रन निकालो 4 साल में, ही इज एवरेजिंग 20। हैरी ब्रुक जस्ट अनाउंस टुडे, हैरी ब्रुक की एवरेज है 20, एक 50 भी नहीं है। डेविड वार्नर की भी 100 शायद एक भी नहीं है 4 साल में। आई थिंक ही इज एवरेजिंग 22। तो जिस तरह हम फखर को डिस्कार्ड कर रहे हैं ना, इस तरह तो हर टीम में दो मेन प्लेयर्स तो रन ही नहीं किए हुए। तो टाइम बहुत है, 4 वार्म अप मैचेस आर मोर देन इनफ टू सी के वो बिल्कुल ही फारिग हो गया तो फिर आप बिठा दो उसको। नेट्स होता है, वार्म अप गेम्स है 4, पहला गेम इजी है। तो फखर स्टिल हैज 5 or 6 गेम लेफ्ट टू असेस। अगर हम वो बिल्कुल ही, तो आप उसको, उसका बैकअप है अब्दुल्ला शफीक आपके पास अगर आपको खिला रहे हैं, मगर ये कि टू not take him to World Cup is just crazy if you ask me. So are you saying that we need to have him in the top 15, Yeah, or are you saying that we should also have him as our frontline sort of opener with Imam, and Abdullah sits out despite his brilliant knock and despite clearly showing that he seems to be in form? Abdullah has played 8 games, List A and ODI combined. And यार, तो वो ठीक है, वो आपका सैंपल साइज 150, कम है, लेकिन आप एक करंट परफॉर्मेंस भी तो देखो ना, एक 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 आपको एक पता चल मैच की जाता है। परफॉर्मेंस। अच्छा, सो यू आर, अच्छा चलें ठीक है, आपका पॉइंट मिल गया। यू आर सेइंग के डिस्काउंट द अब्दुल्ला शफीक इनिंग्स, look at the historical record of Fakhr नो हिस्टोरिकल, and 4 महीने पहले ही स्कोर 300, ही इज एवरेजिंग 45। आई डोंट नो व्हाट लोगों को क्या नजर आ रहा है। अगर फकर इतना बुरा लग रहा है तो बाबर के रन भी ऐसे ही है। नहीं, बाबर यार, बाबर आपके 150 भी मारा है उसने। बाबर इतना इस नेपाल तरीके वाले से में आउट ना, नहीं हो रहा है, एक ही तरीके से स्लिप में आउट नहीं होता जा रहा विदाउट एनी 70,000 फुटवर्क। हम बोल्ड बाबर हो इज अ रहा है, क्लासिक स्लिप प्लेयर, में नहीं इसका आउट तो तो एक बोल्ड हुआ है। फुटवर्क में वो भी मसला हार्दिक नजर पांड्या आया। से, और वो जो बांग्लादेशी स्पिनर से 20 साल के 10 रन। अच्छा, चलें चलें, इट्स दिस, आई डोंट थिंक इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम वी नीड टू रिकंसाइल दिस, बट क्लियरली हमारे नाजरीन कैन मेक अप देयर माइंड। देयर क्लियरली टू स्कूल्स ऑफ थॉट, सो I लेट्स think सी he's व्हाट going. हैपेंस। I have, Let me finish. yes. He's not going anywhere. He's going with the squad. वहां पे 4 गेम मिलेंगे, उसमें इनको टीम को आइडिया हो जाएगा वार्म अप्स में, और जो पहले 1-2 मिनट से खिलाफ गेम है कि कैन ही कंटिन्यू नॉट, ये लॉट ऑफ अच्छा, और अगर उसके अंदर ना चला तो फिर आप क्या, फिर you have Abdullah as a backup in the squad अच्छा, already. चलें Yeah. ठीक है, ठीक है, Look, चलें, आपका व्यू मिल गया। आसिफ, आप ऐड इन करें। yes, I have a lot to say here. Look, let me start with the obvious. Fakhr is woefully out of form. He is playing far below par. Like you said, he looks like he's mentally out of sorts as well. He's been failing despite multiple opportunities. The logical step is to drop him, because that's what happens when you're not playing well. What have you done for us lately? Drop him, right? I think it's not that simple. And I'm going to give you a few examples. If you look at Warner in Australia, look at Bairstow in England, big hitter. If he takes off, the sky is the limit. The score they can reach can be, you bat a team out of the match, right? If he fails,
you have enough batting behind to where you can still get a good total. And just last week, you had Bairstow and Root both fail. England still scored 350 plus. Now, Fakhr, I feel like has that same role. And it's sort of like you're playing with house money, right? If they succeed, great. If they fail, you're still okay. The problem with this approach, and I'm going to admit it, I will admit it 100%, you're giving a long leash and applying a different standard to a player than all the other players. That becomes hypocritical. That becomes unfair. 100%, I agree with that. And yet I'm still saying there's a reason to keep him in. Let me explain a little more. He was talking about Babar. Let me talk about Babar's scores in the last 3 ICC tournaments: Asia Cup 2022, T20 World Cup 2022, Asia Cup 2023. 10, 9, 14, 0, 35, 0, 4, 4, 6, 25, 53, 32, 151 against Nepal, 17, 10, and 29. Now, the question is this. You look at those numbers. Do we drop Babar? Of course not, right? So if I say don't drop Fakhr, the question that was asked of me is, do you say that Fakhr is as good as Babar? No. But do I think that Fakhr's success is equally vital to Pakistan's chances of winning the World Cup? I think the answer to that is possibly yes. I'm going to go back to the 92 World Cup. Again, not because I'm sentimental, because that was played on the same format. Bring up the example of Inzamam ul Haq, who was woefully out of form. We played 10 matches. He failed in every match except for the South Africa one where there was some rain. He scored 48, failed completely. And in the semifinals and finals, his captain played him, and we would not have won that tournament without him. Now, the counterpoint to that, of course, is that Salim Malik had the same issue. He was a key cog in our batting lineup. We still played him, and he failed. And, whatever happened, happened. But the bottom line is, and the other thing that I want to counter is people say, well, Fakhr has failed so many times. Are we waiting for just one innings? No, he's a streaky batsman. When he fails multiple times, we know because we've seen it before. When he succeeds, I'm looking for multiple scores, multiple totals that will propel us to victory. A lot of people criticize his technique. 100%. He has no footwork outside the off stump. It's a lot of hand-eye coordination. I think that's punching down on someone when he's doing poorly, because this is the same technique he had when he scored 180 not out against New Zealand. It's the same technique he had when he scored 200. Same technique he had when he scored 193. No one was criticizing his technique at that point, or people were, very few. And, again, talk about how many batsmen in the history of one-day cricket have 3 180-plus scores. It's Fakhr, it's Guptill, it's Rohit Sharma. No Virat Kohli, no Viv Richards, no AB de Villiers. That's the pedigree of this guy. You talk about bad technique. Who else has bad technique? Shahid Afridi, who has more man of the matches than anyone else in the history of Pakistan. Who else has bad technique? Stephen Smith for Australia. We all know that he bats very strangely, but he succeeds. And so here's my thing. Why am I comfortable with keeping Fakhr in? I'm going to give you one quick example, and I'm almost done here. The Asia Cup match against Sri Lanka. We always talk about our big 3. Imam wasn't there. Babar failed. Fakhr failed. Did the team fail? Did we were all out for 100? No. We actually were able to bat out over the course of 42 overs at 6 runs and over. We are at a point where our batting lineup is mature enough to be able to handle it. So the thing is that I think that we have the luxury of being able to, the way I put it in a nutshell, the Pakistan team can afford to have Fakhr fail. Pakistan's opponents cannot afford to have Fakhr succeed. That's the bottom line. And I know it's unfair, and people can yell at me all they want and they disagree, hypocritical, all that stuff. I take it, I own it. I know that logically what I'm saying doesn't make sense. I still think there is enough of a sense of Fakhr and he has earned that right over the course of his career. And look, Abdullah Shafiq, I love him and he's great, but I feel like Abdullah Shafiq should only come in if there's an injury. That's just the way it is. Agree or disagree, that's my thought. चलें हमारे because we have other things to discuss as well. So दोनों हमारे panelists का point of view आ गया. Just एक चीज मैं इसमें add in करूँगा, and then obviously this is something that we won't be able to reconcile because we clearly have different views. जो अभी आज से बात कर रहे थे, and the statement that you made was that Pakistan can afford for Fakhr to fail. मैं थोड़ा slightly disagree करूँगा because मेरे point of view ये है कि अगर Fakhr दूसरे ओवर में, तीसरे ओवर में आउट हो जाता है, then you're basically exposing Babar Azam to the swinging ball, right? And we know that Pakistan heavily depends on Babar Azam being the anchor. So, if we are in a position where it's almost given that, one of our openers is going to get out in the first 3 or 4 or 5 overs, then we have a possibility of getting 2 down or 3 down when the ball is swinging. I would rather have someone who maybe does not have the upside potential, but who gives us consistent starts.
especially for teams like the likes of Netherlands, the likes of Bangladesh, even the likes of Sri Lanka, Afghanistan. I would want a guy who would give us more consistency. बेशक वो 120 130 की strike rate पे ना जाए, but give us a solid platform. That's again my feeling on this. Again, if Can they I counter one thing about that? Okay, Babar already opens in T20, so he faces the swinging delivery. And the bottom line is, many of us feel he is the best batsman in the world right now. Virat Kohli maybe, but we can't be living in fear that the best batsman in the world is going to be facing a swinging delivery. If anyone can handle that, it's going to be Babar Azam, right? We have to have faith that this man, he's the number one batsman in the world. Play like it. You've earned this chance to go there and lead from the front. No one is ever fearful that Virat Kohli is going to come early on and then he might get exposed and get out. You say, we want Virat there. I want him on that wall. I need him on that wall to go and score. That's why I want Babar. I want Babar there. Yeah, right? India का middle order is much deeper than ours. यार, we have to understand कि अगर Not विराट anymore. out We भी हो have जाता है. Iftihar. ओके. दूसरी चीज आप बात कर रहे थे कि यार उस हिसाब से तो बाबर के भी कुछ इतना अच्छा नहीं हुआ. And I agree. But मेरे नजदीक it's not just the scores, it's the way you get out. It's अब बाबर की I जिस आपने बात understand. की Yeah, है, I understand. got out to Pandya, anyone would have gotten out on that ball, jagged in, vicious swing. I mean, it was kind of an unplayable ball. Got out to Bangladesh, बहुत ही low रह गई ball. Again, any batsman would have struggled. So obviously we have been a bit disappointed with Babar as well, but Fakhar की इसलिए बात ज्यादा आ रही है. The way he's been getting out, slips में catches दिए जा रहा है. So, the last match full toss के ऊपर, so he doesn't. would you his agree? mind No, doesn't seem to be I right. agree with you 100% in that sense. Would you agree that when Fakhar is firing on all cylinders, this team has a swagger that we otherwise do not have? We feel like we're unbeatable. Do you feel that? I feel that, but I also see the odds of that are maybe 1 in 20 innings. So do I take that 1 in 20 innings, or do I rather go with someone who, 5 out of 10 times or 6 out of 10 times gives us Point a taken. solid start? Yeah. My thing is, if he's streaky when he fails, he's streaky when he succeeds, and it won't be 1 in 20. It'll end up being 5 in 7 or 4 in 7. But again, he may fail, and then where am I? I know. I totally know there's a flaw to my argument. I'm just saying he's earned that chance because of what he's done before. But I agree with you. I think मसला ये हो गया कि फॉर्मेट भी इतने ज्यादा हो गए ना, वो सब लंप हो जाते हैं. फखर का T20 में एवरेज 20 है. अगर स्ट्रीकी बैट्समैन होता है ना फखर, तो उसकी 50 एवरेज नहीं चल रही होती 4 साल से. मैं समझा के लोगों को थक गया हूँ कि that's what average means. Streaky player cannot carry average of 45 over 4 years. कब वो डेब्यू फखर का? नहीं, but he fails a lot at a time, and then he passes a lot. वो चीज है ना कि वो फिर 100 100 बना लेता है, तो वो एवरेज तो फिर कवर अप हो जाती है. When you have such a large sample size, तो 5 और 6 या 8 innings की failures do very little to the mean, right? वो एवरेज तो उतनी रहती है. बड़ा बैड पैच उसका कभी नहीं आया. और अगर इतना स्ट्रीकी होता ना, तो इतनी एवरेज 50 एवरेज नहीं होती, वो भी ओपनर की. चलो पीछे अगर आप 6 छठे पे खेल रहे होते हो, देन यू कीप एवरेज बाय गेटिंग नॉट आउट. ओपनर की 50 एवरेज हो ही नहीं सकती अगर स्ट्रीकी हो. मैंने उसकी 70 पेज वो मैचेस की लिस्ट निकाली थी. देयर इज नो, दिस इज द बिगेस्ट बैड मैच इन वन डे. पीपल आर कंफ्यूजिंग विद T20. T20 में ही इज मोर लेस कंसिस्टेंट. उसकी एवरेज 28 T20. अच्छा, चलें, ये तो हमें 2-3 दिनों में पता चल जाएगा. माय ओनली होप इज इफ दे डू पिक हिम के both Mudassir and Asif, जो इनका कॉन्फिडेंस है, I think he lives up to that. Obviously, at the end of the day, we want our team to win. So if they do pick him, obviously we're supporting him. Yeah, no player is more important than the team. Yeah. If he's not selected and Abdullah Shafiq is selected, I'll support him just as much. We want to win. And same, if he is selected, 100% backing him. He's gonna jump back into. यार क्रिकेट बहुत ज्यादा है. 3-4 वार्म अप्स होंगे, और शायद अगर साउथ अफ्रीका की जो रूमर्स है वो ओडीआई सीरीज हो गई, तो फिर तो एक अजाब ही हो जाएगा. इतनी क्रिकेट खेले वर्ल्ड कप में 9 गेम्स है. मुझे तो लगता है आपको 15 के 15 ना, मुझे लगता है हर टीम में यूज होंगे. मुझे तो ये भी लग रहा है जो 3 बैठे होंगे ना, उनको भी बुलाना पड़ेगा. जिस तरह भी उन्होंने जबान को बुलाया ना, इस तरह हर टीम विल यूज देयर 15 प्लेयर्स. दिस एक्सट्रीमली टॉप टूर्नामेंट. चलें, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम इसको आगे लेके चलते हैं. द सेकंड आई थिंक जो टॉपिक जो बहुत आजकल डिस्कस हो रहा है, रिप्लेसमेंट ऑफ नसीम शाह. एंड अनफॉर्चुनेटली जो बातें आ रही हैं कि नसीम शाह इज नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल. अगेन वी आर होपिंग this is not true, and because the PCB so far officially hasn't said that he's ruled out, but Cricinfo और बाकी जगह से ये बात आ रही है that he's
he's gonna rest for a number of months now. So अगर नसीम शाह नहीं होते available, so क्या आपके ख्याल है who's sort of the best option? मैं आपके सामने कुछ नाम लिख देता हूँ और आपसे फिर मैं आप दोनों पैनलिस्ट हैं. So we have there's talk of Dhani, there's talk of Hassan Ali, um, Zaman Khan. Zaman Khan, either way, I mean, Naseem है नहीं है, उनका नाम भी है, but as a replacement, I'm talking about not just the 15, but also in our playing 11, right? So we have Shaheen and Haris Rauf, who's our third pacer in our starting 11. So जो नाम है contention में, there's Hassan Ali, there's Zaman Khan, then there is Dhani, Mohammad Amir की बात हो रही है, you know, although again, as we speak, officially he's retired, but there's a school of thought कि अगर उनसे बात की जाए, he might take his retirement back. और फिर जो है अरशद इकबाल is another name that's being floated around. So क्या आपके ख्याल है? हसनैन के बारे में बात हो रही है, but I think he's injured. एहसानुल्लाह के बारे में बात हो रही है. एहसानुल्लाह के I think जो latest reports हैं कि he started bowling in the nets, but I don't know his current form, but he's also a name that is under contention. क्या आपकी रैंकिंग होगी या क्या इनके अलावा भी कोई आपके पास नाम है तो who would you recommend? Who would like to go first? Mudassir can go. यार ये बहुत it's a very tough question. कंसिस्टेंसी होती ना वो सिर्फ शाहीन की थी लास्ट ईयर तक, फिर वो इंजर्ड हुआ तो नसीम carried the team really well in Asia Cup, and and actually he's a better bowler for all phases. Naseem was opening, middle, death, जो वही कर सकता है. Haris Rauf is doing really well क्योंकि he's putting a lot of effort. Haris Rauf का problem ये है कि जब वो 140 तक भी आ जाते हैं ना, then he give away a lot of runs. He only bowls well or doesn't get hit. The poor guy has to bowl like 148, 150. और हार्ड लैंड वो हिट करता है, उसकी बॉल स्विंग तो इतनी होती नहीं है. He in a good zone वो आ रहा है 150 पे, he just keeping in like a bail height या फोर्थ में ना. तो हारिस अभी कंसिस्टेंट है फिलहाल. तो हारिस तो है ना, बट आप बताएं कि हारिस और शाहीन के साथ कौन होंगे आपके? नहीं, तो मैं वही कह रहा था कि पूरी अगर आप पाकिस्तान के जितने बॉलर भी देखो ना, अगर आप मुझसे पूछो शाहीन और नसीम के अलावा ना, दे आर ऑल सपोर्टिव. प्रॉब्लम ये है ना, यू पिक अकॉर्डिंग टू टीम नीड. जैसे हो ये रहा था कि वसीम कोई उस तरह के लेवल का बॉलर नहीं है, वसीम जूनियर. वो पिच इन हो रहा था क्योंकि हमें बीच में डेथ में प्रॉब्लम हो रही थी, तो ही बोल्स दिस, हिज बॉल रिवर्सेस एट द एंड. फिर इसी तरह आपका जमान और जूनियर कैन कम्पीट फॉर द सेम स्पॉट. आई वुड एग्री दैट. फिर आपके पास कौन बचता है? हसनैन इंजर्ड है. हसन अली. हाँ, हसन अली. हाँ, हसनैन और एहसान अली, सॉरी एहसानुल्लाह इंजर्ड है. हसन अली को अगेन इज अ कैप्टन्स बॉलर. सरफराज में ही वाज डूइंग फाइन. अगर आप हसन अली को, अगर इफ समबडी गारंटीज मी कि वो शुरू के 10 ओवर नहीं कराएगा और आखिरी 15 ओवर 20 ओवर नहीं करेगा, सरफराज उसको बॉल कराता था फर्स्ट चेंज विद अ स्लिप क्योंकि उसकी बॉल स्विंग हो रही थी इंग्लैंड में. तो इफ द कैप्टन कैन यूज इट, मे बी वी कैन टेक अ रिस्क फॉर मिडिल ऑर्डर्स. मगर वो ओपन के लिए या एंड के लिए वो फिर उसकी बहुत पिटाई होती है. तो हसन अली might be better than all these other junior, मगर ये कि it depends how you want to open कौन करेगा. प्रॉब्लम ये है बॉल That's के the whole thing. See, this is the issue. Yeah. मेरे ख्याल में Who's gonna open? you're looking for an opening bowler, right? Yeah. That's the thing. And that's where there's a problem. So for me, this list you have Arshad, Ihsanullah. I mean, you know, they don't have the experience. There are too many question marks to bring them in a World Cup. I like Ihsanullah, but this is not his time. Hasnain is injured, and yeah, but sorry, ये जमान खान के भी तो कोई नहीं था कोई एक्सपीरियंस, उसको भी तो आपने लेकर आया ना, डेब्यू करवाया. Huh, but Zaman Khan has played a lot of T20 cricket, and we know he's a specialist who bowls Yorkers and the death overs. You know, he's never, in all of his domestic that we've seen, we've never seen Zaman Khan be wayward, right? As far as I've seen, and I haven't seen that much. But I think it's unfair to bring like Arshad. I've never seen him, and I admit my ignorance here. But I mean, it's a lot to put someone who has never ever played before in the middle, unless he's outstanding, and you know, in which case I will stand corrected. But I think some experience should count for something going into a World Cup.
that's where I'd say yes, Zaman should be there, but I don't think Zaman should be opening the bowling. Yeah. So for me, the names that come up are Dhani, who has some experience. And whenever he's been called upon, he has succeeded. He has good pace. He bowls it in the right channels. He can swing the ball. He's got a lot of good energy about him. Good spirit. He's a good fielder. He can bat a little bit. Look, Hassan Ali, I also think, and you talk about experience, this guy, look, we've all suffered at the hands of Hassan Ali before, but at the same time, he's one of our top test bowlers right now. Yeah, test swinging base, the new yeah. ball. So why not let him try swinging a new ball? I know Modasso will disagree with me here, but maybe against the Netherlands, try him out and see. Yeah. I don't, and he can bat, and he is also a high energy So, guy. So I Asif, would think about him. Yeah. And then the last thing, I think Amir is a wild card. His attitude is horrible. He has openly antagonized Babar. But if there's some way they can reconcile that, think about a pace attack, opening attack of Shaheen Afridi and Amir with Rauf coming in all at their peak. That's pretty enticing. I don't know. Yeah. यार असल में वो चक्कर ये कि हमारे पास स्विंग वाले बॉलर कम है ना. ये शाहीन और नसीम ही बॉल दे स्विंग इन द बिग. अगर पिच अच्छी हो, कंडीशन अगर अच्छी हो, तो दे आर वेरी डेंजरस. धानी का सीम है, पेस है. एहसान उल्लाह भी मेरा नहीं, ये सब ये मेनली सीम यूज करते हैं. दे डोंट स्विंग, ऑल ऑफ देम. स्विंग सिर्फ शायद हसन अली के पास होगी, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. So एक और चीज आई थिंक हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टूर्नामेंट, सो वी हैव 9 गेम्स. उससे पहले हमारे पास वार्म अप गेम्स भी हैं. सो हो सकता है कि वी मे नीड टू in some games not have both Shaheen and Haris Rauf, right? Because उनको भी हो सकता है एक आधी गेम में हमें रेस्ट करवाना पड़े उनमें से एक को. So then if only one of them is playing, we don't want two inexperienced pacers with them, right? So bringing in someone like Hassan Ali or Amir, at least at any one point in time, we have two senior players or experienced players. Plus, in most games, we'll have 3 of them. So मेरा भी वोट यही होगा कि हसन अली या आमिर. Again, Amir, I know, is a question mark. A lot of people don't want him because of his attitude. But at this time, I think attitude ko goli maro. If he's performing, that's what counts. Provided he apologizes to Babar, and you don't want disharmony in the team. If he comes around, I mean, he should know this is his last chance for glory. If he brings us to a World Cup championship, all will be forgiven. This is his last chance, I think. So I'm willing to take that risk. And we don't know if he's ready himself. He's only playing T20 for the last 2-3 years. So उसकी fitness भी नहीं पता कि is he gonna agree to even come back for? Yeah, because ये भी सुनने में आया था कि वो 2 साल रिटायरमेंट के बाद then he can apply for, I don't know, British citizenship or start playing. कोई ऐसी भी चीज बात आ रही थी. तो if he plays for Pakistan, तो वो सारा टाइम पीरियड जो अभी उसके रिटायरमेंट के बाद है, go back to square one. But again, I mean, there's no harm trying and talking to him if we feel that he is the right guy. I think ideally, मतलब as good. क्या कहेंगे उसको? I don't think it's practically possible. I mean, मेरे ख्याल से वो नहीं होगा option. I think it's worth exploring. अच्छा, चले अब next again to keep our episode running and trying to wind up. The third important piece of the puzzle is the spin, right? So एक चीज जिसमें हमने struggle किया है is lack of penetration in spin. I mean, Shadab, we are playing him because obviously वो depth पिलाता है, batting में all rounder है. But as a pure specialist bowler, he's disappointed off late. I mean, half trackers, full tosses. A school of thought here that we need to bring someone like Abrar. I mean, we tried Usama Mir. Afghanistan series को इतनी अच्छी नहीं गई. Usama Mir is someone that we can persist with, perhaps not. और दूसरा option ये है bringing in someone like Abrar. और दूसरा इमाद का भी नाम आ रहा है, इमाद वसीम का. He's had good performances in the CPL. Especially opening the bowling. Again, जिस तरह आमिर के साथ कोई issues हैं, I don't know क्या इमाद के साथ भी कुछ sort of political या कोई person to person issues चल रहे हैं, which are keeping him out. But इमाद वसीम का भी spin department में नाम आ रहा है. So इनके बारे में how do we rectify? Are you happy with our current spin attack, or would you recommend bringing in someone like Abrar and or Imad into the squad? आसिफ, आप बात करना चाहोगे इस पर?
Yeah, it's a very tough question. I think the performance of the spinners on the Sri Lankan pitches will not necessarily translate to what we saw in India. But the bottom line is whether it's spinning or not, your length is your length, right? So Yeah. look, we Shadab is our vice captain. He does so many other things for the team. He's a dynamic fielder. He is a good batsman. He smiles for everyone on the team way too much. But the thing is, I think he's our guy. I mean, he is our wicket taking option. I think we've got people in the team. Look, if there was a way that Imad Wasim could come in, I would say bring him in. But I don't see that happening. I think the rift between Imad and Babar in the management goes very deep. And I think there are egos involved, and I think he'd be less likely to try and reconcile that. If he could come in, I would take him at a heartbeat, 100%. एक second on this point, we did play him against Afghanistan recently. So अगर इतना ईगो का मसला था PCB और उसके against, so why did we Imad play him? Wasim? Yeah, he played against Afghanistan just a few months T20. back, T20 में. Oh, T20. So, Yeah, he yeah. scored actually. He performed. Yeah, and he if he performed. could come in, PSL में he performed. Yeah, I would take him in a heartbeat. 100%, I would take him in place of Nawaz, because Nawaz is also good but not great. I think we underestimate the value of the part-time spinners, and I know you never want to have part-time spinners, you want to have specialists, but if the Khar takes wickets, I think I'm still an advocate for Agha Salman. He does take wickets, not a lot, but the bottom line is you want a spearhead wicket-taking bowler. It's got to be Shadab right now. Abrar, again, I feel like we've not seen him play limited overs cricket. I don't know, leg spinners, just like Shadab, I don't know how many bad balls he's going to bowl per over. I've just not seen enough of him to be comfortable to insert him in that high pressure environment. Again, remember, every single match we're playing in, you'll have a crowd that is against us. Every single match. That's a lot of pressure. And I don't know that at this young stage of his career, if he's ready for that, because I've not seen it. So I will still go with what I know and what I trust. What made us number one? These are the guys, and you have to trust in them and hope that they'll come through. I'm taking a much less risky approach with this than I did with the Fakhr thing, but I think that's the way to go. But so again, एक और एपिसोड में आपने बात की थी upside potential के लिए, right? So do you feel Shadab gives us that upside potential? I mean, I yes. I differ. I differ from Mudassir here in the sense that he said he's restricting, or one of you said restricting. I think he is at his best a wicket-taking bowler. When he is on song, he's not bowling to restrict. He's bowling to take wickets, and we've seen him do it. He hasn't done it much recently. He's looked out of sorts, but we know that he's got that in him. And so I do think upside potential of Shadab is something we've already seen, so we know he can do it. With Abrar, we don't know. We've never seen it before, right? So there's the thing about upside potential that you've seen and upside potential that is there in theory, but you've never seen. That's where I differ in an experience. But Abrar would bring in a mystery angle as well, right? I mean, all the talk about mystery spinner, unleashing a mystery spinner during the World Cup versus somebody that the whole world knows and has footage on. Right? I wish we had brought him in during the Asia Cup and in these Afghanistan matches. There's these left arm spinner who Sufyan Muqim, who I've seen. We've got a few really good mystery spinners who are out there who have not been blooded yet. I just think it's not the logical sequence to bring people in a panic just for the World Cup. यार ये बहुत बड़ा ब्लंडर है. अब तो तुम अगर आप लोग याद करो, इंग्लैंड से व्हाइट वॉश हो गया था ना टेस्ट. पैनिक हुआ आखिरी टेस्ट में, अपनी सेकंड लास्ट टेस्ट में कितने प्लेयर्स आए थे फिर न्यूजीलैंड में. रिजवान बाहर बैठा, सरफराज आया, सऊद शकील गॉट एडेड, अब्रार गॉट एडेड, चाचा रोमान आए. 5 प्लेयर डाले जो who are not part of the gang. वो सबको पता है जो कोर है हमारे टीम का. अब अब्रार जो है वो मिस्ट्री स्पिनर है. मिस्ट्री स्पिनर का भी टेस्ट में they work for wide ball. तो उस वक्त बल्कि मजे की बात की, जब अब्रार को डाला था पाकिस्तान में कुछ लोग कह रहे तो मिस्ट्री स्पिनर है, टेस्ट मैच में मिस्ट्री स्पिनर नहीं चलते, आपके कन्वेंशनल स्पिनर चलते हैं. एंड ही इज बीन बॉलिंग सो गुड. इंग्लैंड के खिलाफ ही टुक विकेट, देन न्यूजीलैंड, देन श्रीलंका. तो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर वी डिड in last year or two going into World Cup. दो हैं, एक तो अब्रार को नहीं चांस दिया आपने. उसामा मीर इज गुड, मे बी इट्स आवर बैड लक, मगर उसामा का मुझे शुरू से मैं इसको ही कह रहा था, ही इज अ लेग स्पिनर, यू ऑलरेडी हैव योर बीसी लेग स्पिनर. तो शदाब को आप इस वक्त नहीं निकाल सकते थे, तो उसामा की जगह वैसे भी नहीं बन रही थी. तो अब्रार इज अ बिग मिस. और दूसरा सऊद शकील, यार ही मेड 750s consecutive in his first 7 games in the history of cricket.
अगर वो बंदा नहीं खेलेगा तो मुझे नहीं पता फिर कौन खेलता है यार इसको। ही लिस्ट एवरेज इज 45, उसके 70 लिस्ट गेम्स है। ही इज विनिंग कैप्टन ऑफ T20। आप उसको 28 साल का वो हो गया है, उसका हक पहले बनता है बाकी टीम का। अब फिर होता क्या है, फिर अब जैसे अब्दुल्ला है, नो ही इज अ ग्रेट प्लेयर, 8 मैच खेले मैं, टोटल मैच उसके 20 भी नहीं है डोमेस्टिक्स कंबाइंड। साउथ खेल रहा है 10 साल से, 2 साल बातेंगे 30 का हो गया, फिर उसको बाय बाय कर देंगे। तो ये जो मेरे से पूछ रहे हैं, दे वर द बिगेस्ट ब्लंडर कि आपने साउथ नहीं ट्राई किया दो होम सीरीज में और अब्रार को मिस किया है। सिर्फ ओनली द ओनली गाय हु गॉट सम चांस वाज उसामा मीर। अब वर्ल्ड कप इज टू क्लोज, मुझे नहीं पता कि आई गेस इज टू लेट टू डू एनीथिंग राइट नाउ। वो भी ठीक है भाई, बाबर हैज बीन लकी इन वर्ल्ड कप, ही इज द कैप्टन who likes to play his own team. तो मैं तो कह रहा हूँ give him his team, don't change at the last time. He has been survived, अगर वो survive करता है इस वर्ल्ड कप में hopefully, तो then he's gonna stay as a captain. मगर अगर आप historically देखो, अगर टीम अगर गड़बड़ होती है तो nobody can continue captaincy post World Cup. Yeah, I think you're very clear, and I think we all agree that either we will win the World Cup or Babar will lose the captaincy afterwards. नॉट नेसेसरी विन द वर्ल्ड कप, एटलीस्ट नहीं सेमीफाइनल में तो पहुंचना होता है ना। अगर सेमीफाइनल में भी नहीं अगर पहुंचते, या अगर सेमीफाइनल में पहुंच गए या इंडिया को हरा दिया तो ही विल बी ओके। yeah, that's what I think too, because yes, I mean, realistically speaking, I would place us maybe in the top 4 or 5 teams, but not the favorite, and certainly not after this Asia Cup performance. So for me, We're just waiting to peak. We're waiting to peak. होपफुली अच्छा, एक और आखिरी चीज, सो बल्कि दो ऐसी चीजें जो जुड़ी हुई हैं, मिडिल ऑर्डर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वी हैव सऊद शकील, जिससे आपने बात की, उनको मौका नहीं मिला। सलमान अली आगा, आई नो आसिफ, ही हैज positive views on him. Salman Ali Agha, do we continue? And also this question about wicket keeper. Do we continue with Haris? और एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि स्पेशली इंडिया की पिचेस में, जहां हमें पता है कि स्पिन भी जरा ज्यादा होती है, ब्रिंग समवन मोर एक्सपीरियंस लाइक सरफराज। इन दो क्वेश्चंस के बारे में लेट्स क्विकली हैव आवर थॉट्स। मे बी हारिस वर्सेस सरफराज की बात कर लेते हैं। मुदस्सिर, आपकी क्या टेक है? वो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड आइडिया। रिजवान जो होगा ही विल बी फर्स्ट चॉइस, तो सरफराज की बारी नहीं आएगी। रिजवान तो आईसीयू से भी आगे खेलता है ना मैच, तो रिजवान तो नहीं खेलने देगा उसको। वो तो हारिस भी नहीं खेलेगा, मतलब हाँ बात है कि हारिस नहीं अगर खेलेगा। खुदा ना खास्ता किसी एक हाँ मैच में बुखार हो जाता है उसको, या मसल पुल एग्जैक्टली। हो जाती है, और तो हु वुड यू रादर प्ले? एंड अगर इफ यू प्ले मैं हारिस, वही तो वही obviously कह रहा हारिस था। कैन तो नॉट प्ले नंबर 4, राइट? या सो रिजवान खेलेगा और हारिस तो एज अ बैट्समैन खेली, ही इज नॉट इवन एलिजिबल। मुझे नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, क्यों खिलाया था उसको, आई हैव नो आइडिया। सरफराज कैन बी अ गुड, अगर रिजवान अगर इंजर्ड होता है तो सरफराज कैन प्ले। मगर जो लोग कहते हैं सरफराज को एज अ बैट्समैन खिला दो, वो भी बेवकूफों वाली बातें कर रहे हैं। ये इनमें से अगर आप मुझसे पूछो ना, कोई भी कैनॉट प्ले एज अ प्योर बैट्समैन। राइट। रिजवान का बस ये है कि ही इज अ फाइटर, ही इज अ गट्सी गाय, वो अपनी जितनी रिसोर्सेज हैं ही स्कोर्स, ही इज कंसिस्टेंट। तो आई एम फाइन विद रिजवान। सरफराज इज नॉट अ बैड आइडिया फॉर एज अ या बैक। ना, वो तो आई थिंक हमें एग्रीमेंट है कि इन दोनों में से, हारिस और सरफराज में से, कोई भी हमारी प्लेइंग 11 में ऑटोमेटिकली नहीं आते एज अ Yeah. प्योर या बैट्समैन। बट द पॉइंट इज, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टूर्नामेंट, वी हैव 9 गेम्स, वी हैव वार्म अप गेम्स। इन इन द सर्कमस्टांस के अगर किसी एक दो गेम्स में रिजवान को कोई माइनर सी इंजरी हो जाती है, कोई निगल हो जाती है, तो हमारे पास एक रेडी विकेट कीपर होना चाहिए। सो हु आर यू मोर कंफर्टेबल विद, हारिस और सरफराज? I would go with Haris, and in the batting lineup, then I would promote Iftikhar to number 4. Let Iftikhar have the opportunity to build an innings. We've all seen, the poor guy comes in usually when the innings is in a shambles and he has to bat quickly. I'd like to see what Iftikhar can do when he has the time to play dot balls and build his innings up. And Yeah. Haris, we know, can hit. I mean, he's not a number 4 batsman, but he can come lower down when the time comes to accelerate. I think he's younger. I've seen him keep. He's very dynamic. I would go with Haris, but that's more a gut feeling because neither of these guys have played in India. Yeah. Right. एक I mean, ऑप्शन था जो Sarfraz at least has experience playing against India, at least in Champions Trophy, and has been the captain. So, एक ऑप्शन ये and था कि जो मैं पहले एक दफा प्रोग्राम में कहा था मैंने कि अगर सऊद को ट्राई किया होता, तो सऊद ना वो भी हिटर नहीं है, ही कैन नॉट प्ले एट 6। तो जैसे अगर रिजवान अवेलेबल नहीं है, इंजर्ड है,
So you can play Saud at 4, or Haris can bet at 7 after Chacha and Agha Salman. So this can be a really good option. Problem ये है कि हमने Saud को try नहीं किया. ट्राई नहीं किया. He has the potential, मगर I don't know कि इतना लेट आप कर सकते हो. तो सरफराज का experience है, तो there are pros and cons. I would have taken सरफराज, मगर we हारिस को लेके जा रहे हैं तो वो भी fine. Whatever. Again, it's the captain's. That's why we have captains. सरफराज के होने से एटलीस्ट जो एक चीज question- मैं देखता हूँ कि हाँ. अगर सरफराज के इंक्लूजन से कि सरफराज आप जो भी बात कर लें, जो कैप्टनसी जो उसकी थी और जिस तरह से मैचेस Great. दिखाए हैं, और एक चीज हम बात करते हैं कि बाबर की कैप्टनसी इज स्टिल इवॉल्विंग और काफी क्वेश्चन मार्क्स हैं. मे बी हैविंग सरफराज इन द मिक्स, द shrewdness that he brings in, that could really help us. तो मैं उस यहाँ से थोड़ा सा सरफराज की तरफ भी इंक्लाइन हो रहा हूँ. I know I love Haris. Yeah. I love the brand of cricket he plays, but from the angle of the wisdom, the captaincy skill that Sarfraz brings in, it's a tough call. And he can retire peacefully. सरफराज को थोड़ा इज्जत से रिटायर कर दे. मैं और दूसरा ये कि रिव्यूज अच्छे ले हो जाएंगे. रिव्यूज हम इतने बुरे ले रहे हैं. रिजवान जब बाबर रिजवान से पूछता तो कभी जवाब नहीं. सरफराज इज क्लियर, yes or no. It's amazing कि उसके रिव्यूज काफी स्ट्रांग होते थे. Right. अच्छा, फाइनली राणा साहब को टाटा बाय बाय, या फहीम को किनको निकालेंगे आप? Who are sort of the clear people जिनको आप कहेंगे यार ये तो मैं जवाब पता नहीं. राणा साहब मुझे लगता है वो लंदन से आए थे. राणा साहब अच्छा, सही. आई मीन उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते. आई मीन टू बी फेयर, एक दो अच्छी गेम्स दी थी, बट अगेन उसके कुछ बन नहीं रही वो चीज के, बिकॉज बॉलर वो इतना कोई अमेजिंग है नहीं कि विकेट ले. बैट्समैन अगेन उसकी एवरेज कोई इतनी नहीं है. सो या तो आप फिर फुल फ्लैश बॉलर ले लो या फुल फ्लैश बैट्समैन ले लो. दैट्स माय टेक. आसिफ, आप क्या कहोगे? I think we like the idea of Fahim Ashraf more than what we actually see in Fahim Ashraf, because it's the biggest, the most poorly kept secret in Pakistan is we want a Pandya, and we don't have one. And Razak, ever since Razak has gone, we've not been able to find that person. And we thought Mohammad Wasim could maybe do it. We thought Fahim Ashraf maybe could do it. Ahmed Jamal, I think, was closer to that. Yeah, because my only issue with dropping Fahim Ashraf is that then we lose that option of a fast bowling or medium pace bowling all-rounder. So if he goes out, we have to have a like-for-like replacement. Whether it's Wasim Jr. I mean, to some extent. Yeah, whether it's Wasim Jr. or this Amir Jamal. Amir Jamal, I think, he has space. He's space. But I do know that whatever question you ask, Mudassir will find a way to put Saud Shakil in the answer. Just like you'll put Fakhar Zaman in there. I've stopped. I've said my piece. I'm done. See, I'm just they didn't use him. I hope it's too late. I was just frustrated कि यार मजाक है तो ना. चलें जी, थोड़ी लंबी हो गई एपिसोड, बट आई होप यू गाइस एंजॉयड इट. अगेन कुछ ही दिनों में हमारा स्क्वाड निकल आएगा. बड़ी हेल्दी डिस्कशन हुई, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू हुए, बट एट द एंड ऑफ द डे जो भी टीम अनाउंस होती है, वी आर गोना बैक दैट टीम. एक दफा एक टीम अनाउंस हो गई तो जो खामखा क्रिटिसिज्म शुरू हो जाती है, अब इसको निकालो, वो एक दफा टीम अनाउंस हो जाती है, support our guys. These are the guys who delivered for us in the past, and inshallah, I mean, we've had a good record recently in ICC tournaments. I mean, finalists in the last T20 World Cup, se pehle again semi-finalists T20 World Cup mein. So we've been doing well. So again, Asia Cup nahi acha gaya, but that is not to say कि आगे जाके भी we're a bad team. No, that's not the case. ICC ranking is a good metric. सिर्फ एक आधी सीरीज जीत के नहीं करते. It's a whole trajectory which leads up to that. So इसी के साथ आप सबके साथ इजाजत चाहेंगे. And again, keep supporting Pakistan and keep supporting our channel by subscribing. We will win, inshallah. इंशाल्लाह. और and as we progress, तो इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा राब्ते में रहेंगे, and we'll keep on bringing you more episodes. Okay, thank you very much, and Allah Hafiz. Allah Hafiz.